बीच में जो क्या है ये वो Good afternoon to all. I am Jui Datta Ghosh, Quality Nurse Coordinator under the Department of Hospital Administration, SDPGIMS. I am delighted to welcome you all to the second session of our online longitudinal training program. As you know, November is celebrated as the month of quality, and this year's theme is Quality Think Different. In alignment with this theme, we have launched this LTP as an innovative and collaborative quality initiative for nurses through the SDPGIMS platform. Today's topic is transportation of the critically ill patient. It is my privilege to introduce today's speaker, Sanjukta Bal. She is a BSc Nursing graduate with a specialization in critical care medicine. She has been serving in the Department of Critical Care Medicine at SDPGIMS since 2005 as a senior nursing officer. Prior to joining SDPGIMS, she worked in Kolkata. Sanjukta Bal involved in continuous education program for nurses in the CCM and has delivered lectures as a speaker at various CNE programs. Please join me in welcoming Sanjukta Bal to begin today's session. Over to Sanjukta. Good afternoon, everybody. Myself, Sanjukta Bal. Today's my topic is transport of critical care ill patient. This is the scenario of the preparing the transfer of patient in our setup. Introduction. Critical ill patient who has critical illness or injury that actually impairs one or more vital organ systems. Adversely, physiological changes during transport of critical ill patients are common and can be life-threatening. The decision of transport a critical ill patient is made when the potential benefits of transport outweigh the potential risks. Risks incurred during transport can be minimized by careful planning and the use of competently trained persons and monitoring equipments. The ICU patients are mostly secure environmental for critical ill patient is to remain immobilized in the ICU, fully supported by a ventilator with all infusion device operating powerless, continuous intensive monitoring in place, and a nurse constantly attending to their needs. However, there are circumstances where the patient must be moved from this control setting to the other hospital areas such as radiological department, operating theaters, or different facilities within the hospital. Why is important the transport of patient? Because the transport of patient is essential part of our patient care. Critical ill patients needs to be transported to alternate location to facilities for additional care that may be related to technical, cognitive, or potential procedural indication not available at the existing location. This entails the transport of diagnostic department, other specialized care unit, or another hospital, transfer of critical ill patient to an intensive care of the tertiary level of hospitals. The outcome is the best of the patient is transported by dedicated team to referring hospital to tertiary hospitals. However, emphasis should be stabilized of the patient's condition at the referring facility itself. The objective of the transfer of patient is to understand the needs, benefits, risks associated with transfer of patients. Knowing the prerequisite components and mode of the transport
enlist the recommended drugs, equipment needs during transport. Understand, stabilize, and adequate patient preparation before transport. Communication and documentation during transport. These are the objectives of transport. The types of transport, the intra-hospital transport, inter-hospital transport and syndrome. Intra-hospital transport means हम लोग patient को transport of patient from one location to the another location within the hospital. The inter-hospital transport means transport of patient between the hospitals. The syndrome means the transfer of patient from one medical site to the nearest available of designated hospital. That means from a road traffic accident site to the nearest hospital. Sorry. The indication of the transport of patient are indication is for diagnostic purpose, CT scan, MRI, therapeutic purpose for surgery or pacemaker replacement, or specialized care for emergency department to ICU at the tertiary level hospital or another department. Contraindication is benefit पोटेंशियल बेनिफिट इज लेस देन पोटेंशियल रिस्क. सपोज हम लोग जो ट्रांसफर ऑफ पेशेंट करेंगे, जब हमें बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा, जो सब पोटेंशियल रिस्क, सपोज हाईली सपोर्टेड विथ आइनोट्रॉप्स, हाईली वेंटिलेटर सपोर्ट, हाईली ऑक्सीजन सैचुरेशन सपोर्ट, ये सब पेशेंट को हम लोग जब शिफ्टिंग करेंगे उससे पहले हम सोचेंगे हमारा बेनिफिट कितना है. बेनिफिट जब लेस होगा तब रिस्क से, तो हम लोग रिस्क क्यों लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे कि ट्रांसफर नहीं करेंगे. दैट इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेशेंट. अनस्टेबल और पोटेंशियली अनस्टेबल पेशेंट, पूरी अनस्टेबल पेशेंट को हम लोग भी ट्रांसपोर्ट नहीं कराएंगे. The adverse effect of transportation. What are the adverse effect during the transportation? That is related to the mishap related to patient care or physiological deterioration related to critical illness. First, lead disconnection, loss of battery power, loss of intravascular access, accidental extubation, occlusion of arterial endotracheal tube, or एग्जॉशन ऑफ O2 सप्लाई. सपोज हम लोग लेके जा रहे हैं, रास्ते में बैटरी पावर हमारा बैकअप सही नहीं था, जितने टाइम जाना था वो बैटरी पावर वाला वो वहां पे भी मिसअप होगा. लॉस ऑफ इंटरवेनस एक्सेस हम लोग सही से नहीं चेक करके लेके जाएंगे, रास्ते में फ्लूइड एक्सट्रावेशन होगा कि हम जो ड्रग्स दे रहे होंगे वो ड्रग्स नहीं होगा, तो वहां पे मिसअप होगा हमारा पेशेंट रिलेटेड. Then physiological deterioration related to critical illness, worsening hypertension. हम लोग सही से ड्रग्स प्रिपेयर करके नहीं लेके गए होंगे कि हाइपोटेंशन चला के नहीं लोगे, बीपी चेक नहीं करेंगे तो हाइपोटेंशन होने का चांस भी, और हाइपोक्सिमा होने के भी चांस होता है. पोटेंशियल मिसअप दैट इज एक्सप्लेन बिफोर, एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन हो सकता है, पेशेंट वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, ईसीजी लीड डिस्कनेक्शन, मॉनिटर पावर फेल्योर, भासोएक्टिव ड्रग्स इंटरप्ट और इंट्रावेनस इन्फिल्ट्रेशन or disconnect. Essential element for transport of communication are mostly communication is the most important part of a transportation. Then personnel, equipment, monitoring, handing over documents or information, medical, legal and ethical aspect. Communication is the most part of the transportation. That when a patient is being to transported, an alternative team assume management responsibility. हम जिस साइड को हम ट्रांसपोर्ट कराएंगे उस टाइम में जो मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको उसी हिसाब से लेना है, क्यों हम एक क्रिटिकल सिचुएशन से हम पेशेंट को ट्रांसफर करके लेके जा रहे हैं. The proper communication regarding to the patient's clinical status, the treatment plan should be communicated to the physician and nurses to nurses level. This communication occurs each time a patient care responsibility is transferred from and to the receiving wards. Before transporting, the receiving ward or procedure room should be confirmed that no delay the receiving the patient. The documentation in the medical record, including the indication of transport and the patient clinical status throughout the time the patients away from the unit to origin place to वहाँ ट्रांसफर करने तक जो इंफॉर्मेशन उनको सही से इंफॉर्मेशन देना चाहिए फिजिशियन टू फिजिशियन और नर्सेस टू नर्सेस लेवल तक. ट्रांसफर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन इस तरह होना चाहिए, जिस रास्ते में हम जाएंगे द रूट ऑफ द ट्रांसपोर्ट मस्ट बी मेड आउट वेल इन एडवांस एंड नोन टू द ट्रांसपोर्ट टीम्स. द शॉर्टेस्ट एंड द सेफेस्ट रूट पॉसिबल मस्ट बी टेकन टू अवॉइड अननेसेसरी डिलेज. The exact time of the patient has to reach the destination department. The procedure room must be specified and checked before initiating the transport.
Then the name of the doctor, name of the sisters, they are available in the destination must be known to in advance. Advance में हमको जानना चाहिए वहाँ पे कौन से डॉक्टर है, वो एफिशिएंट है कि नहीं, जो नर्सेस वहाँ पे है वो सारे इंफॉर्मेशन पेशेंट के बारे में पता है कि नहीं, इसी बारे में हम लोगों को श्योरिटी होना जरूरी है. तो the monitored variable during inter-hospital transportation must be recorded during monitoring sheet and subsequently integrated into the patient's case sheet recorded. That should be communicated with the nurses, patient relatives, patient receiving unit. Information, the reason for transportation, the patient's condition, equipment needed just before leaving the notify the receiving department. Accompanying the personnel. The minimum 2 persons must be accompanying critical ill patient. On this, there is usually one is nurse and another is the physician. The physician trained the advanced life support skill is mandatory. She or he should be adopted in the establishment of vascular intraosseous access, endotracheal intubation, suction, emergency thoracostomy is required. If they should be trained to administer fluids, vasoactive drugs, or bronchodilator therapy as well as when the needed. The nurses, similarly, the nurses is also known as the advanced life support, and nurses who accompany the doctors helps to coordinate to constant monitoring and promoting the intervention. Transfer of the equipments. The airways management equipments, medication, electronic device, trolley, and oxygen cylinder. The airway management, these are the resuscitation kit bag, all size of airway, or laryngoscope, all size the blades with suction catheter. The resuscitation kit, oral airways, stillet, oxygen tubing, brain circuit, ambu bag with mask, ET tube securing tapes, ET tube of different size, adhesive tape, suction apparatus, laryngoscope with blades, suction catheter, all type of nebulizers. The respiratory and severe support equipments, these are the oral nasal airway, face mask, brain circuit of ambu bag, O2 max with tubing, reservoir mask, suction equipments, ET tubes, stillets, laryngoscope, and blades. Bujit, Lama, IV cannula, syringe, and needles, monitor with pulse oximeter, BP, ECG waves. These are the respiratory and SBC support requirement. Check ambu bag, inlet valve, patient valve. यदि हम लोग आम्बू बैग चेक करके नहीं लेके जाएंगे, वहां पे पेशेंट वाल्व खराब होगा, प्रेशर लिमिट वाल्व खराब होगा, तब वो आम्बू करेंगे, वहां से हम लोग सपोर्टिव रेस्पिरेशन सपोर्ट हम दे नहीं पाएंगे. देन चेक द ब्रेन सर्किट. Check the continuity of inner O2 delivery tube. If there is a breach in the inner O2 tube, the entire corrugated limbs becomes dead space. The result in respiratory cirrhosis, which is unresponsive to increasing the minute ventilation. The oxygen cylinder. Oxygen cylinder should be full with reservoir ampoule volume to supply for projected needles plus as 30 minutes reservoir. These are the types of oxygen cylinder: B type, D type, E type. B type 200 liter capacity. The pressure is all same. The D type 400, E type 660, and F type 1360, and G type 300. ड्यूरेशन हम लोगों की कितना होगा, उसी हिसाब से हम लोगों को सिलेक्शन करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर को. These are the electronic device. These are the monitoring, infusion pump, and portable ventilator. Accompanying equipment for practical reason, bag valve ventilation is most commonly employed during intrahospital transport. And in mechanical ventilator patients, ET tube position is located and secure before transport, and the adequate of oxygen and ventilation is reconfirmed. The portable mechanical ventilator are gaining increasing probability in this area as they more reliable administer prescribing minute ventilation and desired O2 concentration. These are the standard resuscitation drugs.
The resuscitation drugs are basic, antiarrhythmic or epinephrine. These are sedative, analgesic, muscle relaxant, and inotropes. We should keep in your resuscitation kit the propofol in 1 vial, 200 mg, adrenaline 2 ampoules in 1 mg, noradrenaline 2 ampoules in 2 mg, or atra in 1 ampoule per 25 mg for sedative and muscle relaxant. The midazolam 5 mg in 4 ampoules, atropine 3 ampoules, choline 1 vial. This is the trolley to transport. Before transport, you should assess the patient. Initial assessment of patients and situation as whole. Benefit must be weighed, risk, degree of urgency to transport. Assess if the patient is stable to transport. If his patient is unstable, you should not be transport. Refractory shock and high vasopressor and inotropes, hypoxemia, high ventilator setting, FI to 100%, secure airway when in doubt. This is the checklist of pre-preparation. Preparation should be checked as A, B, C, D, E, F. A for airway. Airway must be patent, safe to intubate before transport if the patient is airway unstable. Preferable to use cough. जब हम इंटूबेट करेंगे प्रिफर करेंगे हम लोग कॉफ ट्यूब डालने के लिए, क्योंकि कॉफ ट्यूब डालने से कॉफ इन्फ्लेमेशन होकर रहेगा तो पेशेंट को एस्पिरेट होने का चांस बहुत कम रहेगा. Effective ET2 flexion is most important prior to transport, particularly in infants and smaller children. The small changes in head position can be result to tube displacement and accidental extubation due to short length of their trachea. Breathing. Child should be put on a transport ventilator or manual resuscitation bag with shifting into the ambulance. Continuous SPO2, ETSO2, if available, are very useful monitoring tools. Inhalation bronchodilator should be loaded and kept ready in case of emergency. If indicated, chest decompression with the chest tube is done before transport. A nasogastric tube should be inserted in case of children with ileus, intestinal obstruction, or those requirement mechanical ventilation. In adult, you should be checked ABG before the transportation or departure of on the portable ventilator. Set inflating bag valve device, suction, adequate sedation, analgesia, or relaxation should be given before transporting. Adequate O2 reservoir should be kept. In circulation, stable circulation with good access with the central line, otherwise IV cannula. Control the external bleeding. Invasive BP and CBP when indicated. Inotropes if in doubt when they prepare and ready to run. Pump and batteries. Insert a urinary catheter and monitor urine output. In disability, the patient's check should be GCS and pupillary signs, nasogastric tube or orogastric tube. Intubated patient should be adequate sedated. Seizures should be controlled and drugs required during transport should be loaded and labeled. In exposure, the body glucose should be monitored serially. If splint bones, the temperature must be maintained before and during transport. Don't forget these things when you transport. All the notes, referral letters, results, radiographic including CT scan, MRI, X-ray, and blood product, all the investigation should be taken. Inform the receiving units that you are leaving the base units. Inform the relatives and take their contact number. Preparing the patient for transfer. When preparing the patient, patients are secure the intravenous access first, then you stabilize the airway. In trauma victims, stabilize the spinal mobilization. Nasogastric tube before transporting, you should aspirate the nasogastric tube. If in vomiting, you can give antiemetic drugs also. Polish catheters, infusion pump and IV drip functioning properly. Soft wrist and leg restraint. Vital signs display on monitors. Patient is safety secure on a trolley. Documentation. Patient status during transport. Indication for transport.
vital signs, level of consciousness, all adverse events are and drugs in given. Documentation is most important part. When you जब हम लोग निकलेंगे तब से वाइटल सब डॉक्यूमेंट करके रखेंगे. इंट्रांजिएंट प्रोसीजर, अराइवल प्रोसीजर, all documentation should be mentioned. This is the intra-hospital safety accept. It is the checklist of intra-hospital safety accept that is in the scoring method. जब स्कोरिंग ज्यादा होगा तो हमारा सेफ्टी एक्सेप्ट कम हो जाएगा. इसलिए दिस इज दैट इज योर अकॉर्डिंग टू योर हॉस्पिटल इट कैन बी मैनेज. दिस इज द checklist of intra-hospital cover in our hospitals. Then monitoring during the hospital in transit procedure. when हम लोग जब पेशेंट को निकाल के एक वेल सेटल आईसीयू एरिया से निकाल के लेके जाएंगे तो मॉनिटरिंग शुड बी डन. ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स, रेस्पिरेशन or all critical ill patient undergoing transport receiving the same level of basic physiological monitor during transport as they had in the ICU. These including at the minimum continuous ECG monitoring, continuous pulse, periodic measurement of BP, pulse rate, respiration rate. All battery apparatus equipment is fully changed and capable of functioning for the duration of transportation. In transient procedure, हम लोग लेने के रास्ते में हम लोग रूटीन चेकअप ऑफ पेशेंट स्टेटस, जैसे स्टेटस हम लोग लेके गए थे स्टार्टिंग से, उसी कुछ डेटोरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी चेकअप करना जरूरी है. मॉनिटरिंग मस्ट बी विजिबल टू द डॉक्टर्स एंड नर्सेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. केयर मस्ट बी टेकन दैट एयरवे एंड इलनेस lines are not under stress. Communication between the staff during transport is essential. At the destination protocol, if the patient is to be transferred to the another setup of equipment at the destination, it should be checked beforehand. Fully hand over to the receiving staff. The transport team should be remain with the patients until the receiving team is fully ready to take over care. Plug is all the equipments to the main power. जैसे हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पे डेस्टिनेशन एरिया में, वहां पे अच्छे तरह से हम लोग डॉक्टर टू डॉक्टर और सिस्टर टू सिस्टर प्रॉपरली हैंडओवर होना चाहिए. और हम जितने सब इक्विपमेंट लेके जो गए होंगे उसको तुरंत हम प्लग करेंगे. प्लग करके इक्विपमेंट को रखेंगे तो पावर सेविंग के लिए. अराइवल प्रोसीजर असेसमेंट, देन फिर पहुंचने के बाद असेसमेंट टू द पेशेंट, शिफ्टेड टू पेशेंट इन केयरफुली, वेंटिलेटर एस्टेब्लिश. जो सेटिंग हमारा स्टार्टिंग में होगा उसी सेटिंग में हम लोग पेशेंट को वहां फिर सेटिंग करेंगे. कंप्लीट हैंड ओवर टू द पेशेंट्स. देन डॉक्यूमेंटेशन पेशेंट स्टाटस विद द टाइम. स्टार्टिंग टाइम में हम क्या लेके वाइटल स्टाटस लेके आए थे, पेशेंट कंडीशन जो था, रिकॉर्डिंग हमने जो किए रास्ते में उसको, और वहां पहुंचने के टाइम क्या हुआ, सारे डॉक्यूमेंटेशन करके हैंड ओवर करना है. Conclusion: the systematic approach, carefully planning, benefit and risks should be overhead in every individual critical ill patient before transport. Anticipate the worst, think about possible complication and have a plan for how to react. Within sufficient preparation and good equipment, transfer is possible without an adverse event. Early communication will give you enough time to organize additional personnel and transfer itself. Proper use of personnel, selection and availability of appropriate equipments. To take message to the home, although both intra and inter-hospital transport must comply with regulation, you believe patient safety is enhanced during transport by establishing and organizing efficient process supported by appropriate equipments and personnel. Thank you. Any questions? Please unmute yourself and ask if you have any questions. Sanjukta, if you need some explanation, please explain. Because we have time. Hello, madam. Hello. Hello, madam.
yes. am I audible? Hello, हाँ hello. मैडम प्लीज थोड़ा हाँ हेलो हाँ रिंपा दास असिस्टेंट नर्सिंग बोलिए. सुपरिटेंडेंट फ्रॉम एम्स कल्याणी मैम ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन द Yes. टीम शुड बी कंसिस्ट ऑफ थोड़ा बोल देंगे तो अच्छा होगा मतलब ट्रांसपोर्ट के टाइम पे कौन कौन पर्सनल है हाँ, द ट्रांसपोर्टेशन टीम टाइम टीम में टीम मेंबर शुड बी ट्रांसपोर्टेशन टीम में एक कॉम्पिटेटिव हाँ नर्स हाँ होना चाहिए. transportation हाँ, और एक फिजिशियन होना चाहिए जिसको एएलएफ और रेस्पिरेटरी थेरेपी के विषय अच्छे से नॉलेज होना चाहिए. एज वेल एज द नर्स नर्स को भी उतना भी नॉलेज होना चाहिए. एएलएस कर पाएगा. उसके बाद दो व्हील चेयर को जो ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे, दो दो पर्सन चाहिए व्हील चेयर को लेने के लिए. और ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए भी एक बंदे चाहिए. हेलो. हाँ हेलो. हाँ, मैम हाँ हेलो. बोलिए मैम। हेलो, हियर मी. हाँ यस मैम हाँ हाँ यस 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 उनको मुझे चैट में लिख दो. आप चैट में लिख सकती हो. But disconnected. आप चैट में देखिए आप. हेलो. हेलो. कोई नहीं तो. Handover procedure. Someone asked for handover procedure. Sanjukta, please explain. हेलो. नहीं आप बोल चैट में लिख के भेजा है. ओहो. हैंडओवर प्रोसीजर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट और आफ्टर अराइवल ट्रांसपोर्ट. हाँ, हम जब जाके पहुंचेंगे अराइवल प्रोसीजर में, वहां पे जितने डॉक्यूमेंट्स हमारा होगा, जैसे पेशेंट के कंडीशन का वाइटल स्टेटस जो भरे होंगे वो भी दे के आएंगे. जितना डॉक्यूमेंट्स, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी, ऑल थिंग्स शुड बी गिवन टू द सिस्टर. एंड वो सारे ओवर बताना है पेशेंट का डे टू डे स्टार्टिंग से वाइटल लेके उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका कितना ड्रेन था, चेस्ट ड्रेन है कि नहीं है, राइस टू कितना एस्पिरेशन आया था नहीं आया था. Everything should be explained at the time of at the time of जब हम देंगे ओवर उसी टाइम में बताना पड़ेगा उसको सब कुछ उसको. हेलो. Transport team members. ट्रांसपोर्ट Team members. टीम मेंबर should be one physician or one should be nurse and helper, two helper, Patient helper two. two patient helpers, one nursing staff and one physician. Who is expert for ALS? ALS, BLS. Any other questions? You must use checklist also. Checklist के लिए बोल दो.
चेकलिस्ट बोल दो। Before transportation, you should fill the checklist including communication, monitoring and fluids, resuscitation kit and condition pre-transportation. Communication must be parents, residential transporting team, residential receiving team, ward attendant and helpers. Patients' consent should be taken. Nurses transporting area and to nurses receiving area. Transporting area to receiving area में communication होना चाहिए. Then तुम रिसर्च किट में हम लोग को क्या क्या लेके जाना पड़ेगा. ऑक्सीजन सिलेंडर लेना चाहिए, उसमें फुल होना चाहिए ऑक्सीजन. सेल्फ इन्फेक्टिंग बैग लेना चाहिए, ऑक्सीजन ट्यूबिंग विथ फेस मास्क, नाजल प्रोन्स, रिजर्वर मास्क और लैरिंजोस्कोप ऑल साइज को लेना चाहिए. और इन्फ्यूजन पंप लेना चाहिए, जैसे बैटरी उसके साथ बैकअप होना चाहिए. और ऑल सिरिंज से लेना चाहिए. नेबुलाइजेशन के लिए जितना नेबुलाइजेशन डुलिन, एस्टालिन, ब्रूडिकट ऑल नेबुलाइजेशन साथ में लेके जाना चाहिए. और इमरजेंसी ड्रग्स जितना है हमारा, एंटी एरिथमिक ड्रग्स हो गया, सेडेशन हो गया, एड्रेनालिन, एट्रोपिन, ऑल डॉक्यूमेंट ड्रग्स आर केप्ट इन रिसर्टेशन किट. देन मॉनिटरिंग एंड फ्लूइड्स भी ट्रांसपोर्ट चेक में होगा. आईवी कैलुना पैटर्न है कि नहीं उसमें आएगा. सिरिंज ड्रिप सेट तुम्हारा लोडेड होके रखा कि नहीं हुआ है. इन्फ्यूजन पंप वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है. और पंप बैटरी बैकअप हुआ कि नहीं हुआ. और मॉनिटर का सारे सेंसर केबल, हम जो मॉनिटरिंग करेंगे, सेंसर केबल, पावर कॉर्ड फंक्शनिंग, उसका एसपीटी प्रोब काम कर रहा है कि नहीं, ईसीजी लीड सही से काम कर रहा नहीं, वो सब चेक करके लेके जाना. नहीं तो रास्ते में हम लोग लेके जाएंगे, वो लीड काम नहीं करेगा, वो मिसकंसेप्ट क्रिएट करेगा. लीड नहीं कर रहा, तुम लोग सोचोगी चलो देखो अरेस्ट हो गया पेशेंट, कुछ लीड नहीं आ रहा है, असिस्टोल दिखा रहा है, वो भी मिसकंसेप्शन हो सकता है. ये सब चेक करके लेके जाना पड़ेगा. और बिफोर ट्रांसपोर्टिंग तो पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए, ना हाइपर में ना हाइपो में लेके जाना चाहिए. एयरवे सिक्योर होना चाहिए. और परफ्यूजन नॉर्मली, दैट मीन्स तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए. और बेड पेरिफेरल कोल्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, ये होना चाहिए. और सैचुरेशन तुम्हारा एबव 92% होना चाहिए. जब तुम ट्रांसफर करोगी हाइपोऑक्सीजनेट करके लेके जाना पड़ेगा. और शुगर लेवल भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि शुगर लेवल हाइपो होगा तुम लोग लेके नहीं जा सकते उसको. शुगर लेवल ऑल्सो मेंटेन इन चिल्ड्रन केसेस एबव 60 और इन एडल्ट एबव 70. अब सेंसोरियम भी चेक करके लेके जाए, जीसीएस उसका एकदम पोरे उसी से जैसे सेंसोरियम होगा उसी हिसाब से हम वो ट्रांसपोर्टिंग साथ में सामान लेके जा सकते हैं. Most important thing is informed consent before transportation. It is the quality parameter also. According to NABH and JCI standard, informed consent is must. Any other question? Now explain to the parents in Also proper. informed properly before transportation. Any other question regarding transportation? Loaded medication कितना टाइम रखना है वो बता दो. Duration of loaded medications and medications क्या क्या रखेंगे? Medication should be antiarrhythmic, atropine, adrenaline, नॉराड्रेनालिन. जब पेशेंट हाइपोटेंशन में भी जा सकता है. नॉराड्रेनालिन रेस्क्यू और सेप्टिक स्ट्रेंथ होता है. दैट मींस रेस्क्यू इज नॉर्मल स्ट्रेंथ और सेप्टिक इज 10th स्ट्रेंथ वाला. हम लोगों को सेप्टिक बोलते हैं. सेप्टिक स्ट्रेंथ में बना के लेके जा सकते हैं. मीडा सेडेशन के लिए, फेंटा भी सेडेशन में भी इंटूबेटेड हो सकता है. रास्ते में जो हम लोग लेके जा रहे हैं पेशेंट को, रास्ते में इंटूबेटेड भी में भी हो सकता है. इंटूबेटेड पेशेंट तो ठीक है, सो फार सो गुड. आप लोग मीडा और पेंटा को इन्फ्यूजन में लेके जा सकते हो. लेकिन जो पेशेंट इंटूबेशन हो सकता है, मीडा भी लोड करके लेता है, फेंटा एट्राक्यूरियम आप लोड करके भी लेके जा सकते हो. लेकिन बाय हैंड भी लेके जाना और लोड करके भी लेके जाना जा सकते हो. और बस दैट्स इट. एट्रोपिन, एड्रेनालिन, नॉराड्रेनालिन, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, बस दैट्स एनफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सोडा बाइकार्ब, कैल्शियम ग्लूकोनाट यू शुड केप्ट इन योर ये रिसर्टेशन किट में जो होगा उसमें वो सब ड्रग्स रहेगा. टोनडेस्टोज रहेगा, सोडा बाइकार्ब रहेगा, कैल्शियम ग्लूकोनाट रहेगा, केसीएल भी रहेगा उसमें.
जितना इम्पोर्टेंस क्रास्ट्रोली में जितना ड्रग्स आप लोग रखते हो उसमें आप रिसेप्शन किट्स में वो सब रख के लेके जा सकते हो। लेकिन इमरजेंसी लोडेड में एट्रोपिन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, मीडा, फेंटा, आट्रा, दैट। एक किट बैग आप लोग यूज करना, स्पेशली आईसीयू पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन। आईसीयू ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने एक किट दिखाया ना, उसमें किट्स में जो सब रहना है वो सारे चीज लेके जाना पड़ेगा। आपको जो जो यूजफुल आर्टिकल्स है, मेडिसिन है, सब उस किट में रहेगा। एंड उसका एक चेकलिस्ट बना लेना, शिफ्ट वाइज हाँ। उसको आप चेक करते रहना। एंड लोडेड जो मेडिकेशन है उसका आपका डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब सब लिख के आपको एक मतलब लेबलिंग करके रखना है। तो वो जो ऑन ड्यूटी नर्स रहेंगे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो सीनियर नर्स रहेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा एवरी शिफ्ट में आके उसको चेक करना है। एंड बिफोर ट्रांसपोर्टेशन इन्फॉर्म्ड कंसेंट मस्ट बी फिल्ड बाय असाइन्ड नर्सेस। एंड हमारे हॉस्पिटल में सीसीएम में एक अलग से चेकलिस्ट करो। डोज यूज होता है, वो आई थिंक सब हॉस्पिटल में नहीं होता है एंड सब पेशेंट में भी नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में यूज करते हैं। एंड हमारे हॉस्पिटल में कुछ चेकलिस्ट भी यूज होता है स्पेसिफिक फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आप लोग आपका हॉस्पिटल का भी कुछ शेयर कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? संयुक्ता, तुम ओडिया में पूछो, हमें तो आता नहीं है। पूछो पूछो। हेलो, एससीबी से जो बच्चे हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी लैंग्वेज से पूछ सकते क्वेश्चन। हेलो, एससीबी स्टूडेंट, कैन यू हियर मी? आप ओडिया में पूछ सकती हो। हेलो, एससीबी बच्चे पूछ सकते हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। इतने सारे बच्चे बैठे हैं, एक तो क्वेश्चन पूछो कोई। हेलो, नो क्वेश्चन। Okay, thank you. Our next session 5th December, Cotty bundle care. डिस्कनेक्ट कर दी, बोलिए तो कब डिस्कनेक्ट कर दी।